In this new world of AI, GPTs and all, we are experiencing and we have to change our mindset because now we are not only dealing with human but a digital plus a human environment. आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल HR पॉडकास्ट सीरीज़ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज़ इन विच वी आर इनवाइटिंग HR कम्युनिटी से हम HR टॉक्स कर रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट इंडस्ट्री के HRs को अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं और जिसमें हम ऑलरेडी 2 से 3 इंटरव्यू कर चुके हैं। एंड करेंटली टुडे वी आर इन इंदौर एंड हमारे HR पे हम बात करने वाले, जिसमें हमारा आज का टॉपिक बेस्ड है। इट्स किस तरीके से HR का जो रोल होता है ChatGPT और AI के अंदर, जैसा अभी देख रहे हैं कि सिनेरियो चेंज हो रहा है, तो उसमें क्या चीज़ें लग रही हैं, ऑटोमेशन प्रोसेस आ रहा है, तो उसमें किस तरीके से HR का क्या काम है, वो सारी चीज़ें हम जानना चाहेंगे। फॉर डैट वी हैव हरमीत सर विद अस। सर का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मोर देन 2 डेकेड्स सर काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर और ऑटोमेशन में खासकर उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है। एज HR डोमेन के अंदर उन्होंने काफ़ी टाइम से काम किया है। तो हम सर से जानना चाहेंगे हाउ हिज जर्नी स्टार्टेड। कुछ बताएंगे हरमीत सर फॉर द ऑडियंस? Sure. So it's almost 2 decades now, 18, 19 years in this IT industry. Specifically HR की बात करें तो it's almost 16 years in HR. I've seen the phase where पहले website development was a pocket earning stuff for college going students, then mobile applications, then bot, and now it's all about GPT and prompt engineering. So I have seen different decades of Gen Zs, millennials, and now what we call it as the most intelligent generation of our time, who are actually equipped with lots of data available just on their fingertips. Yes, from human resources perspective, the life has changed a lot. The whole realm has changed by this GPTs, this artificial intelligence, and all these analytical tools that we can see around us nowadays. Life में बहुत change हुआ है in terms of from manual labor to analytics, and now towards more how to use these new AI ML tools so that we can enhance our productivity. We can be more human now. Yeah. I always say in my lectures that the best part of using AI, bots, GPTs is that now we have some free time to be more human. Human resources में there was a time where every HR guy was actually 100% busy under documents. Yeah. आपको अपने ही एम्प्लॉयज़ से बात करने का टाइम नहीं रहता था क्योंकि आप उनके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर फुल डे स्पेंड कर देते थे. नाउ ऑल दिस न्यू AI टूल्स, दिस ऑल बॉट्स, GPTs, they all are helping you to get some free time, and you can do the two things which I always say कि ये कोई भी मशीन, कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी नहीं कर पाएगा. ये हमेशा मनुष्य, हमेशा ह्यूमन ही कर पाएंगे. One is empathy, another is innovation. Yeah. वो human emotions, when you connect with your employees, ये चीज़ केवल एक human ही कर सकता है. Agreed? The same thing is with innovation. Thinking something new, something innovative, something, ये चीज़ एक it's a human thing and always be with human. So in this new world, as you asked, in this new world of AIs, pre-trained transformers, maybe Bard, maybe Copilot, maybe OpenAI, ChatGPT. Try to think this as your helpers in your domain, which is actually helping you, helping any HR person, right from a recruiter who is screening profiles, who is coordinating for interviews, who is evaluating candidates, hiring, onboarding to the next stage of employee engagement, employee management, employee trainings, learning, uh, performance managers, then till the exit or the whole life cycle, everything is taken care by HRD department. Lots of documentation, lots of statutory compliances, payroll management. In all these activities now we have tools who can
manage, analyze, and give reports on your fingertips 24 by 7 on the real time basis. So, which has freed human beings to do something new. Always put your efforts कि ठीक है, this routine work, let it give to a bot or to a software to do it, and spend some time in not only meeting your employees, understanding them, and creating a human bond, also at the same time identifying what new you can do in your work, in your day to day routinal work जो काफ़ी सालों से आप करते जा रहे हैं. Now I encourage every HR person to use more and more automation in it and free yourself to think something new. What the better thing I can do. अभी जो रेगुलर प्रोसेस है उससे हम बेटर क्या कर सकते हैं. सो एक पूरा माइंडसेट शिफ्ट देखा है. सो इन दिस वर्ल्ड, अगेन आंसरिंग योर सेम क्वेश्चन, कि इन दिस न्यू वर्ल्ड ऑफ AI, GPTs and all, we are experiencing and we have to change our mindset, because now we are not only dealing with human but a digital plus a human environment. अर्लियर देखा जाता था कि ATS एक कीवर्ड होते थे जिसमें ATS द्वारा रिज्यूम को सर्च किया जाता था, और मोस्टली जो टॉप 500 कंपनीज़ हैं उसमें ATS जो सिनेरियो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं वो कंपनीज. और सॉफ्ट स्किल्स भी एक सिनेरियो है जो बहुत ज़्यादा HR प्रेफर करते हैं कैंडिडेट के अंदर. और जैसा हम बात कर रहे हैं कि AI एंड ChatGPT के ऊपर बात करें तो बहुत सारी ऐसी सॉफ्टवेयर हैं जो रिज्यूम जनरेट करके देते हैं इस समय. तो व्हाट योर व्यूज़, आपको क्या लगता है कि जो टेक्नोलॉजी आई है इससे जो कैंडिडेट है उसकी जो प्रिपरेशन होती है तो कहीं ना कहीं उसको सारी चीज़ें रेडीमेड मिल रही हैं, तो वो उसके लिए हार्मफुल है या इट इज़ उसके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है? ये सब कुछ आपका क्या व्यू है? Great question, really. This is the most asked or the hottest question in the market today, that the candidates who are applying, they are now fabricating their resumes based on the given job description. At the same time, now you have a smart ATS who can identify, and always, as repeating the same thing, use this tool, but still that human intelligence will always have its own pressure. So how you can use this tools to identify, definitely in spite of going through thousands of applications that you are receiving now and going through one by one and spending time, and then next day you are calling to your candidates, better put it in a resume weightage tool or any smart ATS which can give you some weightage of the resumes. Identify top 15, but the first human screening is very important. Use your analytical human intelligence and cognitive skills to identify whether this resume is fabricated or not. AI can help you to give a better resume, but cannot impact your behavioral skills. This is the trick for any recruiter to actually identify whether the resume is fabricated. Whatsoever is written on resume, the candidate has actually done it, या सिर्फ JD से मैचिंग करने के लिए उन्होंने resume में ऐड किया है. So again, I'll say that it's a tool. Do not say that AI can replace human. Human intelligence is always required. And to answer your question, yes, resume screening post this weightage generator, आप top 15 top 20 resumes में बात profiles वाले candidates से बात कीजिए, and try to identify whether it is a fabricated resume or they have genuinely worked on these projects. एज यू वर्ड अबाउट एनालिटिक्स, तो इसी से मैं पूछना चाहूँगा कि HR एनालिटिक्स का भी कुछ सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो HR एनालिटिक्स कंपनी के अंदर जो फीडबैक होता है एम्प्लॉय का, जो टोटल वर्क होता है मंथ का, उसके ऑटोमेशन आ गया है कि आप उसका सारी चीज़ें रख सकते हैं. तो आपको क्या लगता है कि जब ड्यूरिंग द प्रमोशंस जो सारी चीज़ें हम HR एनालिटिक्स में अगर सेव कर सकते हैं, ऑटोमेशन आ गया है, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में या प्रमोशन देते टाइम में वो कितना ज़्यादा हेल्पफुल है फॉर द HR? क्योंकि पहले उनको पूरा मैन्युअली करना पड़ता था, 360 डिग्री फीडबैक वो लेते थे, सारी चीज़ें बात करते थे, मीटिंग्स होती थी, उनका पास परफॉर्मेंस दिखना पड़ता था. लेकिन बहुत सारी चीज़ ऑटोमेटेड हो गई हैं और उसका पूरा वर्क कल्चर जो है उसके कंप्यूटर से कनेक्ट है, तो आपको दिन भर का उसका जो परफॉर्मेंस है वो आपका डायरेक्टली आपके सिस्टम पे आ रहा है.
तो जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं या प्रमोशन दे रहे हैं तो आपको क्या लगता है कितना हेल्पफुल है दिस सॉफ्टवेयर और एआई जैसा हम बात करें चैट जीपीटी आ चुका है, व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? I'll say this new analytical tools which are in the market today, which gives a real time, taking an example of Power BI, which gives a real time dashboard for day to day working, talent flows, performance, and all. This is a blessing for any employee as well as for HR. Okay, I remember days जहाँ पे ईयरली अप्रेजल्स होते थे और केवल उन्हीं दिनों में यू इंटरेक्ट विद एचआर एंड मैनेजर्स एंड समटाइम्स हमारे खुद के परफॉर्मेंस फीडबैक्स एक शॉकर की तरह आते थे बोथ द वेज. कई बार वी अंडरमाइन आर सेल्फ कि हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट मैनेजर वॉज वेरी हैप्पी एंड एचआर वॉज गिविंग अस A+ रेटिंग. काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस अदर वे राउंड भी करा हो. दे थिंक दैट दे वर डूइंग एक्सीलेंटली वेल, बट व्हेन दे सिट इन द अप्रेजल मीटिंग, मैनेजर इज ऑलवेज रेडी विथ लॉट्स ऑफ फीडबैक्स कि आपने ये अच्छा नहीं किया. एंड दैट वाज समटाइम्स नॉट अ वेरी हैप्पी एक्सपीरियंस इन वंस इन अ ईयर. That sometimes spoils managers and HR's relationship with that employees. Now with these new tools, new analytical tools which provide a real-time update, a person can get their performance rating right on their own dashboard in their HRMS system, uh, where actually they know that if they are meeting their monthly targets, if they are meeting their quarterly OKRs, whatsoever type of performance management the organization have, they should always create, with the help of these analytical tools, a dashboard for every employee so that they can have their own self ratings as well as their monthly and quarterly rating structures. जहाँ उनको हर मंथ हर क्वार्टर पता चले how they are performing, and it should be a constructive feedback along from the manager on a regular and real time basis. So already they know before entering into the performance cycle or performance month जब आता है, they already know कि how they have performed in a year because they have their own dashboard. So obviously they are well aware how they have performed. Their expectation is set accordingly. So there is no shockers. In fact, they all know, and it will be a smooth transition. Documentation work, give it to analytical tools, give it to RPA, robotic process automation. There are lots of bots available for all this. Performance manager use BI for their dashboards and give a real time. And today the world is different. It's a hybrid world. Not everyone is in office today. People are sitting at their home, so even they should not feel that we are left alone. Every day their manager is observing and giving them some feedbacks. So at the time of performance, they are well aware what should be their rating approximately and what percentage of hike they should get. थैंक यू हरमीत जी फॉर टॉकिंग ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. और ये बेसिक क्वेश्चन थे जो हम आज के इंटरव्यू में पॉडकास्ट में हम आपसे पूछना चाह रहे थे. और थोड़ा सा हम आपसे और जानकारी लेना चाहेंगे एट लास्ट कि जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारी कंपनीज एंड एसोसिएशन एचआर की बन रही हैं, एचआर कॉन्क्लेव्स वगैरह हो रहे हैं पैन इंडिया लेवल पर. इंदौर में भी अभी कुछ इवेंट्स हमने देखने मिले हैं. तो व्हाट्स योर व्यूज़ जो अभी एसोसिएशन या एचआर कम्युनिटी कर रही है, तो उसके लिए आपका क्या व्यू है? जो अभी आपने जैसा आपने भी कुछ इवेंट्स अटेंड किए होंगे इंदौर में, तो व्हाट्स योर व्यू जो सारी चीज़ें चल रही हैं उसके आपका क्या व्यू है? In my last 6 months experience in Indore, after returning from Bangalore, I should say that Indore is on a fast track. It's actually blitzscaling. With the blink of your eye, you can see next day you have 10 new startups registered. And these associations, these forums, this is actually very constructive forums. What I have experienced after meeting lots of founders here, they're helping each other. Okay, and this is how a startup ecosystem is built up, where one startup is actually using the product made by another startup instead of going through a conventional product, and they're helping each other in improvising their product. I have seen this example recently, so I think it's worth stating that example here in this forum, that yes, this is something what I am observing because of, and Indore is really booming up like anything in central India. It can be the next IT destination of central India with lots of benefits of real estate prices, great talent,
And the best part is that being in the central India, it has availability of talent across the country. Anyone is comfortable to come to central India. And these associations, these events that we are having, and specifically these type of podcasts, these type of informative information that we are spreading across, not only in technology forums but also in HRs, in finance, and administrative and infrastructure domains. That is excellent, is doing excellently well supported by government of MP, very well supported by MPIDC and other government organizations. There is no doubt that very soon you will see Indore as one of the IT hub of Central India. Thank you, Harmeet ji, for providing your valuable time on talking on the topic of AI and ChatGPT scenario as a HR. और हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा पॉडकास्ट काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ जो हम सीरीज़ कर रहे हैं उसमें काफ़ी अच्छा सर ने आज यहाँ पे अच्छे तरीके से बताया है और ऑडियंस को भी कुछ जानने मिला हो किस तरीके से AI एंड ChatGPT काम कर रहे हैं और सर ने काफ़ी अच्छे इनपुट्स दिए हैं कैंडिडेट्स के लिए जो कि रिज्यूम थ्रू ChatGPT या AI के थ्रू यूज़ कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी अच्छे इनपुट्स दिए इंसाइट्स दिए तो वो चीज़ अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेटिंग एज फ्रॉम अदर candidates in the interview also. So this was all about our today's interview. Saurabh from Knowledge Buddy Learning Academy, and this podcast series is HR podcast series in association with TalentMax HR Consultancy. Thank you.